students, I once again welcome you all on my YouTube channel, that is the Easy Chemistry Tutorial by Diya Jaiswal. Okay, now in the last video we have seen about the Hazel's law of constant heat summation. Today we are moving to the next topic, that is the spontaneous process, and today we will be completing this chapter. So this will be almost the last video of this chapter, but most of you have commented me and asked me to make a separate video on the numericals based on chemical thermodynamics. So I will try to make that video after this video, and so that you can study all the numericals, or you can practice all the numericals after studying this chapter completely, and you can get all the numericals in one go. Okay, so we will make that video after this video. And today we will move to the last topic, that is the spontaneous process. Okay, today we are going to see about the spontaneous process, the second law of thermodynamics, and the Gibbs energy. Okay, so all these we are going to cover it by today. Now, so let us move to the topic, that is the spontaneous process. So first of all, we all know that what do we mean by spontaneous. Okay, we all have heard this word spontaneous. Spontaneous means by its own, जो अपने आप हो जाए, that is called as the spontaneous, the one which does not require any external source of energy to perform, or any external means for carrying out that process. Then that process is called as the spontaneous process, the one which occur naturally. The one which occur naturally is nothing but the spontaneous process. And similar is with the reactions also. Okay, those reactions which occur spontaneously, in which no external heat or external different type of energy is needed to be provided for completing that reaction. Such reactions will also be called as the spontaneous reactions. Okay, so let us see some example. Simple example is a water flowing from the higher level. ठीक है, अगर पहाड़ पे आप देखते हो कि पहाड़ों से पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. Okay, automatically the water falls from higher level to the lower level. It does not require any source. Okay, so such process which occurs naturally, which do not require any external influence, such process are called as the spontaneous process. Another example, if you keep a hot cup of coffee, okay, at room temperature, after some time it will get colder. Okay, it will get cold. So this point, or this process, since it is occurring naturally, it is called as the spontaneous process. Now in this case, when we are talking about the hot coffee getting colder, what do you think? It will get colder up to which extent? Means does it will become ice कि मैंने एक hot cup of tea को रख दिया room temperature पे ठंडा होने के लिए, and after some time it has become a cold coffee with or iced coffee. Do you think like that? Yes, it will not happen. It will gain the temperature which is the temperature of the atmosphere. जो भी atmosphere का, जो भी आपके room का temperature है, उतना temperature आ जाने के बाद ये जो आपकी process है वो क्या हो जाएगी? Stop हो जाएगी. Means what? The process, spontaneous process will continue. Okay, the spontaneous process will continue till the equilibrium is reached. Equilibrium आ जाएगा कि आपकी जो cup है, सपोज अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस. ओके, अभी हॉट चल रहा है टेम्परेचर, तो हम ले लेते हैं 32. ओके, सो इफ इट इज 32 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपका हॉट कप ऑफ कॉफी का टेम्परेचर कुछ है 90 डिग्री सेल्सियस सपोज. ओके, तो व्हेन यू आर कीपिंग इट इन अ रूम टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस, द टेम्परेचर ऑफ द कॉफी कूल्स डाउन एंड इट विल रीच अप टू 32 डिग्री सेल्सियस. एक बार उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस आ गया, उसके बाद वो क्या होगा? द प्रोसेस विल स्टॉप. फिर उससे और ठंडा नहीं होता जाएगा. दैट एट दैट प्रोसेस, एट दैट टाइम विल से दैट द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द कप ऑफ कॉफी एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एंड एट दैट टाइम द प्रोसेस विल स्टॉप. Then again another example is of the ice. Ice melts. Okay, ice melts at room temperature. When it is at 0 degrees Celsius, it is in the form of the ice, and as you bring it out from 0 degrees Celsius, or as you keep it in the room at room atmosphere temperature, then it will melt. So this is also a spontaneous process. These all process does not require any external source or any external
energy. Okay, so such processes are called as the spontaneous process. Okay, so so spontaneous process, the some key points for the spontaneous process are, the first point is that the process occurs naturally. Okay, the process occurs naturally and it does not require any external influences. Okay, so the process occurs naturally. First point is this. The second point, now the second point is, says that this process is flows, or the process continues, the spontaneous process continues in only one direction, in only one direction. Okay, or if we are talking about the reactions, if we are talking about reactions, then these are unidirectional reactions, means the one which flow from one side to the other and it cannot be reversed. And if we want to reverse such process, then we require an external source. Okay, the process continues in only one direction and cannot be and can be reversed. It can be reversed, but it can be reversed only in presence of some external means, in presence of some external influences, some external influences. Okay, and the third point is, just now we have said that this process continues till the equilibrium is reached. The process continues till the equilibrium is reached. Okay, this is one of the important point. Now let us give one example for this point. The process continues in only one direction and can be reversed only in presence of some external force. Okay, जैसे आपने अभी just बोला कि cup of coffee को आपने बाहर, एक hot coffee है आपकी, उसको आपने room temperature पे रख दिया, और रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट्स टेम्परेचर विल फॉल डाउन एंड इट विल रीच टू द रूम टेम्परेचर. बट क्या विदाउट आप उसको हीट प्रोवाइड किए या विदाउट कुछ भी किए आप उसको वापस से गर्म कर सकते हो? नो. ओके, वो कब गर्म होगा, जब आप उसको गैस पर ऑन करोगे, कुछ हीट, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करोगे, देन ओनली योर कॉफी विल अगेन बिकम हॉट. सो सच प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बट विद एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. Okay, and this process occurs naturally and it continues till the equilibrium is reached. अब इसका जो एनर्जी का फ्लो है, फोर्थ पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस is in the direction in which energy is lowered. इसका मीनिंग क्या हुआ? The energy of the spontaneous process or the direction of the spontaneous process is or I should say that the spontaneous process flow in a direction where the energy is lowered. Means what? That whenever a spontaneous process is taking place, then when the process starts, the system or whatever reaction you are studying, that is having a higher energy level, and when it flow down, means whenever the process is going on, then the energy get lowered. मतलब क्या हो रहा है, अगर आप वाटर का ले लेते हो, ठीक है, वाटर जब आपके हायर लेवल पे है, इट हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, देन इट स्टार्ट फ्लोइंग. ओके, then again it start flowing, and when it will reach to the ground, again means the kinetic energy, when it is flowing it has a kinetic energy. So this kinetic energy is coming down, and when it is on the floor, when the water comes to the floor, then it has, okay, so or the least kinetic energy. अगर वो still है पानी तो उसकी potential energy हो जाएगी, अगर flow होने के बाद ground level पे आने के बाद भी अगर वो flow हो रहा है, then it has some kinetic energy. तो अब ये क्या हो गया, kinetic energy water की starting में high थी और धीरे धीरे जैसे वो ground पे आ गया, मतलब आपकी spontaneous process जब हो चुकी है, then
वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रही है, जहां पर एनर्जी लो हो रही है. ओके, सो दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इन द डायरेक्शन इन विच द एनर्जी इज लोअर्ड. सिमिलरली हॉट कप ऑफ कॉफी को अगेन हम लोग रिकैप करते हैं. हॉट कप ऑफ कॉफी मतलब क्या है, टेम्परेचर इज हाई. टेम्परेचर इज हाई मीन्स the energy is high. Temperature high है तो energy high क्यों है, because when the temperature is high all the molecules, कॉफी के भी कुछ atoms कुछ molecules है, so all the molecules in the cup of coffee are in a highly activated state. और जैसे जैसे आपका temperature down आ जाएगा उनकी activation energy कम होती जाएगी and the energy will lower down. Means again in this process also the process is flowing in a direction where the energy is lower. Okay, so this is your fourth point. Now if we are saying that energy और spontaneously को अगर हम relate करें कि हमने क्या कहा कि energy जिस direction में कम होगी उस direction में अगर हमारा process हो रहा है then it is spontaneous process. ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, इस point पे से हम लोग सोच सकते हैं. Means हम लोगों को बोलना है कि suppose अगर मैंने एक reaction ले लिया, okay, suppose my reaction is Na, सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं हम NaOH का. NaOH means the base is reacting with your acid to form salt and water. Okay, this is your salt and water, and in this process the heat that is liberated, that is minus 57 kilojoules per mole. मतलब ये जब प्रोसेस हो रही है तब आपकी एनर्जी बाहर कितनी आ रही है, 57 किलो जूल्स पर मोल. ओके, तो अब ये क्या बोलना है कि ये जब रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट. ओके, ऑब्वियसली हमने अभी जस्ट बोला कि एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, हायर से लोअर. तो यहाँ पर हायर था, लोअर पे आ गया, इसीलिए निगेटिव साइन आ गया बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बट एंड इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इस प्रोसेस में हमको कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगाना नहीं पड़ता. बट अगर वही चीज मैं आइस के लिए बोलूं कि अगर हमारा आइस जो है दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है हमारा. ओके, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब अगर इसको मैं रूम टेम्परेचर पर लेकर आती हूँ तो क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर लेके आ रही हूँ तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माय लिक्विड वाटर. ओके, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया. बट इस प्रोसेस में डेल्टा H पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज इन दिस केस दिस जो आइस है आपका, जो वाटर है विच वॉज इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, हम लोग इसको आइस ना लिखते हुए वाटर लिखते हैं. वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब हमारा सॉलिड स्टेट में आइस है. अब ये जो वाटर है हमारा सॉलिड स्टेट में, ये क्या करेगा, इट इज एब्सॉर्बिंग द हीट. इट इज एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एटमोस्फियर. रूम टेम्परेचर से वो क्या कर रहा है, इट इज एब्सॉर्बिंग द हीट and it is getting converted into liquid state. Yes, तो यहाँ पर क्या हो गई, एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब the reaction or the system is endothermic. System कैसा बन गया, endothermic, because it is absorbing energy. But again this is also spontaneous. ये भी एक spontaneous process है. भले ये एंडोथर्मिक है फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है. ये एक्सोथर्मिक है, ये तो समझ में आता है कि चलो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट बोला कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा एनर्जी क्या होगी, लोअर डायरेक्शन में फ्लो होगी. बट सिंस यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है वो, मतलब क्या हो रहा है, लोअर से एनर्जी हायर की तरफ जा रही है और फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. इसका मतलब वी कैन नॉट से दैट एक्सोथर्मिसिटी एंड स्पॉन्टेनियस, इसका कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते कि अगर एक्सोथर्मिक है मतलब स्पॉन्टेनियस, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते. तो अब हम बताएंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेदर द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. हम तो ऐसे सिस्टम को, ये तो चलो सिंपल रिएक्शंस है तो वी नो, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है. तो हमें कैसे पता चलेगा, सिर्फ रिएक्शन को देख के या सिर्फ उनकी डेल्टा H की वैल्यूज को देख के, हाउ कैन वी से वेदर इट इज spontaneous or non-spontaneous? So for that again a new term has been given to define this spontaneous or to relate this spontaneity with the reactions. So and that term is entropy. Okay, so next topic that we are going to see is entropy. This entropy, the value of entropy decides whether the reaction is spontaneous or it is non-spontaneous. This entropy along with the second law, when this entropy follows the second law of thermodynamics, then it gives us the relation between the entropy and the spontaneity. So that we are going to see now. Have you understood this much?
Okay. So we know that whenever a substance, whenever it is in the solid state, it has a systematic arrangement of atoms. But when it get converted into the liquid state, okay, simple example हम लोगों ने water का ले लिया. So when the water gets the water is in the liquid state, what happens? All the molecules are now separated from each other. Okay, और उनके बीच में की जो gap है, ये जो gap यहाँ पर nil थी, यहाँ पर वो gap क्या हो जाएगी? It gets मतलब this arrangement gets some disorderness. Okay, कुछ ये यहाँ पे है orderly arrangement. This was an orderly arrangement of an atom. Now in this case there is some disorder. Okay, again if this water is in the vapor state, suppose it is in the gaseous form. Now suppose the water in your gaseous form, means if we are studying about the vapors, तो vapors में क्या होगा? These molecules are more disordered. मतलब इसमें जो disorder का जो आपका rate है, जो भी rate है, that will be more. It will be in more disordered state. More disordered state. Yes, we know this one. So whenever a system is having a solid state, it has an orderly arrangement. When it moves, when we talk about the liquid, then there is some disorder, and if we are talking about the gaseous state of that particular substance, then it is in the more disordered form. And the measure of this disorderness, okay, the measure of this disorderness, we can say here that the measure of this disorderness is nothing but the entropy. इसी को हम क्या बोलेंगे? Entropy. Okay, कि कितना डिसऑर्डरनेस आपके सिस्टम में है, आपके रिएक्शन में है, वही क्या है? उसकी एंट्रोपी है. एंड दिस एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एस. कैपिटल एस मीन्स एंट्रोपी. ओके, नाउ लेट अस स्टडी वन एग्जांपल फॉर इट. लेट अस कंसीडर वन रिएक्शन फॉर इट. सपोज आई एम स्टडिंग अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. Okay, I2 in the solid state. Okay, solid iodine का हम लोग suppose dissolution कर रहे हैं, means we are preparing a solution. Okay, so this iodine in the solid state will react with some water, aqueous, and it will get converted into the aqueous iodine. ठीक है, उसका solution बन गया. Now in this case, the change in the entropy means the change in the disorderness will be. Now we are going to see that क्या होगा वो. I2 was in the solid state. Solid state मतलब उसमें जो arrangement है atoms का, that is a proper crystalline solid अगर है ये, तो कैसा रहेगा? Proper arrangement of atoms means they are tightly packed with each other, means they are in a ordered manner. Now when we are adding a water to it and it is getting converted into liquid, just now we have said that whenever a system is converting from solid to liquid, the disorderness increases. So in this case, यहाँ पे क्या था आपका? Disorderness कम था, यहाँ पर disorderness बढ़ गया. Okay, मतलब suppose अगर इसकी disorderness की value 2 है, तो यहाँ पे उसकी disorderness की value क्या हो गई? 8. And delta, we have to find out the change in the entropy, change in the disorderness. तो change in the disorderness क्या है? Final minus initial means 8 minus 2, that is 6. मतलब ये जो moiety है, that is nothing but positive. So in this case, this delta S is greater than 0, or we can say that it is positive. It is positive. Means whenever a system is changing from solid to gas or solid to liquid, its disorderness increases, and with an increase in the disorderness, the delta S change in the entropy will become positive. Okay, it will become positive. And suppose if there is a change of state with the same state, means there is only the change in the atom. Suppose the example ले लेते हैं, hydrogen H2 in the gas form. Okay, H2 in the gas form is getting converted into 2 hydrogen atoms in the gaseous form. अब आप क्या बोलते हो? डेल्टा S की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? See यहाँ पे H2 is in the gaseous state. H2 means 2 atoms of hydrogen in this case are combined. हाइड्रोजन गैस है, तो H2
क्या एक जो गैस है, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने 10 मोल्स ले लिए, तो मतलब क्या करना है हमको 10 मॉलिक्यूल्स लेने, 1 2 3, सिंपल ले रही हूँ मैं ऐसे। 10 मोल्स मीन्स इट डजंट मीन बाय 10 मॉलिक्यूल्स, ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एवोगैड्रोस नंबर, बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 10 हम लोगों ने सपोज मॉलिक्यूल्स ले लिए H2 के, तो 10 है। तो अगर ये गैसियस स्टेट में तो इस तरह से दूर दूर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सभी क्या है, H2 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 and every molecule is H2। ये इस तरह का इसका स्टेट है। Now this H2 is getting converted into 2H, means अब ये जो एक एक आपका मॉलिक्यूल था, इट इज गेटिंग ब्रोकन एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोजन। यस, 2 हाइड्रोजन, मतलब आपका डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, और भी बढ़ गया। यहाँ कम से कम वो कंबाइंड स्टेट में थे, 2 एटम्स तो भी एक साथ थे एंड दे वर इन द कंबाइंड स्टेट। सो इन दिस केस ऑल्दो बोथ आर हैविंग द गैसियस स्टेट, but the disorderness for 2 hydrogen atom is much more than that of the hydrogen gas molecule. Okay, so in this case also delta S will be greater than 0 or it is positive. Okay, the disorderness has increased. Okay, now अब ये every time हम लोग इस तरह से फॉर्मुलेट तो नहीं कर सकते हर एक रिएक्शन में कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये डिसऑर्डरनेस होगा या नहीं, और हम लोग के सोचने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है कि we'll get the right answer or not. Yes, so in order to find out this the value of this entropy, we have to take some quantitative assessment. Okay, quantitative definition we have to consider. Okay, so this, according to the quantitative definition of entropy, the entropy is nothing but is equals to, or it is the amount of the heat supplied to the reaction at a particular temperature. Entropy is nothing but the amount of heat supplied to a system or to a process or to a reaction at a particular temperature. Means what? The entropy is nothing but the amount of heat provided in a reversible manner at a particular temperature. So this entropy can be measured as the ratio of Q reversible upon T. Now why I am saying reversible? Because starting में reaction क्या है, spontaneous. We are concentrating over the spontaneous reaction, and spontaneous reaction में ऑटोमेटिक हीट फ्लो हो रहा है. ओके, बट अगर यही प्रोसेस को हम अगर उल्टी तरीके से देखें, ओके, कितनी हीट इवॉल्व होगी उतनी ही हीट एब्जॉर्ब होगी. यस, अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहा है तो जितनी भी हीट वो दे के आ रहा है, अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ऑब्वियसली हीट ऑटोमेटिकली बाहर आएगी या एब्जॉर्ब होगी. अब जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई या जितनी भी हीट बाहर आई उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करके वो सिस्टम प्रो हो रहा है. तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी हीट उसको सप्लाई करने पर वो वापस से इनिशियल स्टेट में जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस तो अपने आप हो रही थी, हमने तो उसमें कुछ किया ही नहीं था. तो अब इसीलिए हम लोग को वो हीट कंटेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितनी हीट देनी पड़ेगी उसी प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, वो हम यहाँ पर लेंगे. ओके, सो देयरफॉर एंट्रोपी इज Q रिवर्सिबल अपॉन T. So this is the quantitative method to measure the entropy. Now what does this equation says? This equation says that this entropy is directly proportional to the amount of heat supplied. इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, ओके, किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, सिंपल सा ले लेते हम लोग वाटर, ठीक है, वाटर को मैंने हीट प्रोवाइड की. वाटर को हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, उसमें के एक एक मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. यस, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. हमारे साथ भी वही होता है. बढ़िया गर्मी का मौसम है, ठीक है, सपोज गर्मी का मौसम है और हम सब एसी वाले रूम में बैठे हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा फंक्शन चल रहा है, एसी सब ऑन है, हम लोग की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, वी विल सिट इन एन ऑर्डरली मैनर एंड विल एंजॉय द प्रोग्राम. ओके, बट सपोज स्विच इलेक्ट्रिसिटी या करंट चला जाता है. ओके, करंट चला गया, ऑल द एसीज हैव बीन पुट ऑफ, थोड़ी देर तक तो हम बैठे रहेंगे,
बट जैसे जैसे रूम टेम्परेचर हायर होता जाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई है, गर्मी का सीजन है, सो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा हमारी भी शुरू हो जाएगी, यहाँ से हवा देंगे, यहाँ से हवा देंगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मतलब हमारी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, विद द इंक्रीज ऑफ द हीट बढ़ गई। वैसे ही एवरी टाइम कोई भी सिस्टम हम ले लेते हैं, तो जैसे ही हम सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे क्या होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विल गेट इंक्रीज, और जितना मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही डिसऑर्डरनेस हो जाएगा। जो सिस्टमेटिक तरीके से हॉल में सब लोग पहले बैठे थे, अब उसी तरह से दिखेंगे क्या, नहीं, कोई इधर हिल रहा है, कोई उधर हिल रहा है, कोई अपने आप को हवा दे रहा है, कोई इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, यस, कुछ ना कुछ मूवमेंट बढ़ जाएगी। मीन्स व्हाट, द रैंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस हैज इंक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीट, यस। तो उसी तरह हर एक मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके कप में, या आपका आइस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो या वाटर की बात करें, तो वाटर को जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की तो उसमें के सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतना ही रैंडमनेस बढ़ेगा, और उतना ही रैंडमनेस बढ़ेगा मतलब क्या हो गया, उतनी ही एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो जितना जितना हीट बढ़ते जाएगा उतनी ही एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी, एंड देयरफॉर एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q reversible and it is inversely proportional to the temperature. It is inversely proportional to the temperature. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी अगर रूम टेम्परेचर पे देखी जाए, ओके, अगर सपोज रूम टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कोई सिस्टम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। अब इस रूम टेम्परेचर पे मैंने हीट प्रोवाइड की, ओके, इस रूम टेम्परेचर पे मैंने हीट प्रोवाइड की, मतलब अभी क्या है कि हमने एसी तो बंद है, सब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, हिल रहे हैं, डिसऑर्डरनेस हो रहा है बिकॉज अब गर्मी हो रही है। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसऑर्डरनेस है उसकी सपोज एक वैल्यू ले लेते हैं, कुछ सपोज 10 वैल्यूज है, ठीक है, 10 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर ले लेते हैं कि ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है 10 लोग, जो कुछ ज्यादा ही, जिनको एसी में बैठने की आदत है, वैसे 10 लोग कुछ ज्यादा ही डिसऑर्डरनेस दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एंट्रोपी की वैल्यू ले ली सपोज 10। अब ऐसे रूम टेम्परेचर पे एंट्रोपी की वैल्यू हो गई 10, बट अब ऑलरेडी हम लोग सब जो है वो गर्मी में बैठे हुए हैं, फिर भी बाकी लोग स्टिल बैठे क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं है बहुत ज्यादा एसी की। लेकिन जैसे ही मैंने हायर टेम्परेचर, अब ये बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर से एकदम रूम जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वैसा सपोज 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तब एक और डिसऑर्डरनेस रहेगी। ऐसे डिसऑर्डरनेस में ऑलरेडी वहां डिसऑर्डरनेस है और उसमें मैं उसको और हीटर लगा देती हूँ, ओके, मैंने उस रूम में अब एसी की जगह क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो मेरे 10 लोग जो रूम टेम्परेचर से मैंने हीट प्रोवाइड की थी, रूम टेम्परेचर मतलब एसी से मैंने रूम टेम्परेचर पे आई तो डिसऑर्डरनेस था मेरा 10, बट वही मेरा ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है और उसमें मैंने और थोड़ा सा हीट, मतलब सपोज रूम टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस और उसमें मैंने थोड़ा और हीट प्रोवाइड कर दिया, मतलब हीटर लगा दिया और सपोज यहाँ पे 44 हो गया, तब इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ऑलरेडी सब लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, सभी लोग ऑलरेडी गर्मी में बैठे हुए हैं, तो 2 डिग्री टेम्परेचर या 3 डिग्री टेम्परेचर फर्क पड़ेगा क्या, जितना डिसऑर्डरनेस 42 पे है उतना ही लगभग डिसऑर्डरनेस 44 पे भी रहेगा, yes, because already the system was in the disordered state और उस disordered state में ऑलरेडी सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, उसमें तुमने और थोड़ा हीट प्रोवाइड कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी यहाँ बढ़ रही, क्योंकि यहाँ एकदम तुमने क्या किया है, एसी से निकाल के उनको हीटर में डाल दिया है, एसी से निकाल के हीटर में डाल दिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू हियर। मीन्स व्हाट, The entropy is reversible और inversely proportional to temperature. जितना टेम्परेचर कम उतनी ही एंट्रोपी ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी एंट्रोपी कम। टेम्परेचर ज्यादा था, थोड़ा और हीट प्रोवाइड कर दिया, एंट्रोपी में चेंज आया, डिसऑर्डरनेस चेंज हुआ, बट इतना नहीं। लेकिन एसी से आपने सीधा हीटर लगा दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, द डिसऑर्डरनेस जो एकदम ऑर्डरली मैनर में सब लोग बैठे थे वो अब क्या हो गया, और भी हाई स्टेट में डिसऑर्डरनेस में आ गए। जो यहाँ पर पहले 10 लोग
थोड़ा सा गर्मी गर्मी कर रहे थे, अब अगर यहाँ पर मैंने हीटर लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और भी लोग गर्मी गर्मी करने लग जाएंगे, सभी लोगों को गर्मी होना शुरू हो जाएगी. सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी विल increase. So therefore the entropy is inversely proportional to temperature. Means if you are providing a heat, external heat at lower temperature, it will affect the entropy more as compared to a system which is already at a higher temperature and you are providing an external heat to that system or that particular process. तो वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कम टेम्परेचर बढ़ रही है. Therefore एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, अब ये तो हो गया, हम लोगों ने बोल दिया कि एंट्रोपी और इसके बीच में रिलेशन भी दे दिया. बट अब हमारा जो एक्चुअल पॉइंट, हम कहाँ पे थे, स्पॉन्टेनिटी पे, कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये हम किस तरह से पहचानेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, ये एंट्रोपी एंड द स्पॉन्टेनिटी, वी आर गोइंग टू रिलेट दिस विद द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट which process is spontaneous and which process is non-spontaneous. Let us see that. Suppose the reaction is of the type twice H2O2 in the liquid state getting converted into H2O and O2 gas. ठीक है, मतलब रिएक्शन हमारी कहां से शुरू हुई, लिक्विड से स्टार्ट हुई और गैस पे इट इज गिविंग आउट सम लिक्विड एंड गैस. मतलब क्या हो गया कि डिसऑर्डरनेस बढ़ा है. स्टेट वाज इन द लिक्विड स्टेट और लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया, O2 गैस फॉर्म होगी, मींस डिसऑर्डरनेस बढ़ा है. एंट्रोपी की वैल्यू है प्लस 126 किलो जूल. ओके, सिमिलरली अगर ये रिएक्शन को देखा जाए, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद सपोज और ऑक्सीजन. ओके, दिस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब ये H2 is reacting with O2 to form H2O. अब ये जो रिएक्शन है H2O, इसमें डेल्टा एस की वैल्यू है -327 किलो जूल. ओके, अब ये जो दोनों प्रोसेस है ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो अकर्स नेचुरली, दिस ऑल्सो अकर्स नेचुरली, ऑल्दो इट इज एब्सॉर्बिंग द हीट, बट ये हीट हम लोग एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं कर रहे. ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एब्सॉर्ब कर रहा है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गैस. तो ये भी आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अब ये दोनों चीजें स्पॉन्टेनियस है और इनकी डेल्टा एस की वैल्यू इसकी पॉजिटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस है, इसकी वैल्यू निगेटिव है मतलब फिर भी स्पॉन्टेनियस. तो अब मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ एक सिस्टम का एंट्रोपी लेते हैं तो वी कैन नॉट से दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, मतलब ये जो फैक्टर है, सिर्फ एंट्रोपी चेंज का फैक्टर, सिस्टम की एंट्रोपी अगर चेंज हो रही है तो उसके फैक्टर से हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता सकते. मीन्स व्हाट, वी हैव टू टेक सम अदर फैक्टर आल्सो इनटू कंसिडरेशन while relating the spontaneity and entropy with each other. That relation is given by the second law of thermodynamics. Okay, second law of thermodynamics states that the total entropy of the system and the surrounding increases in a spontaneous process. मतलब प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस रहेगी, जब उसका टोटल एंट्रोपी मींस द सिस्टम का भी एंट्रोपी प्लस द सराउंडिंग का एंट्रोपी. कोई भी सिस्टम जब वर्क कर रहा है तो उसके साथ सिस्टम भी काम कर रहा है और सराउंडिंग भी काम कर रहा है. यस, both are involved in the particular process. So the second law of thermodynamics says that the total entropy मतलब system plus surrounding, the total entropy of system and the surrounding increases in a spontaneous process. मतलब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ये जो टोटल एंट्रोपी है वो बढ़ेगा, और अगर ये तो एंट्रोपी कम हो रहा है मतलब सिस्टम क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, सो लेट अस सी दैट. So the second law of thermodynamics states that the total entropy of a system and the surrounding increases in the spontaneous process. Means what? That the change or the total entropy delta S total is equals to delta S of system plus delta S of surrounding. मीन्स जब हम एंट्रोपी दोनों की लेंगे, सिस्टम की भी और सराउंडिंग की भी, मतलब ऐसी जो टोटल एंट्रोपी है ये अगर इंक्रीज हो रही है, सिस्टम जब प्रोसेस हो रहा है तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ये दोनों का एडिशन अगर
हायर है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आते वक्त अगर टोटल एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, देन इट विल बी एन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, लेट्स सी हाउ. सपोज अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो देख लेते हैं हम. H2 in the gaseous state plus O2 in your gaseous state gives you H2O. Okay, two molecules of H2O in the liquid state. Okay, this was our suppose ये है हमारा H2O and in this case the entropy was 327 kilojoules minus 327 kilojoules. ठीक है, ये हम लोगों ने सिस्टम देखा. Now this is the entropy of the system, but we want the entropy of the total entropy. Okay, we don't want the system entropy, we want the total entropy. तो total ये तो system का entropy हमारे पास है, but we have to find out the surrounding entropy also. Now we know that whenever this reaction is carried out, the enthalpy change, okay, the enthalpy change during this reaction is 572 kilojoules. Okay, ठीक है, and at 298 Kelvin. Okay, ये प्रोसेस जो है ये भी हो रही है हमारी 298 केल्विन पे. एंड जब ये प्रोसेस हो रही है, देन एट द H वैल्यू इज माइनस 572 kilojoules. Okay, so if the reaction is taking place at this, okay, मतलब जब ये रिएक्शन हो रही है तो इतनी हीट बाहर आ रही है. And just now we have said that the entropy can be calculated as Q reversible upon T. Q reversible upon T, where Q is taken in joules and temperature is taken in Kelvin. Okay, Q की वैल्यू जो है हमारी जो रिवर्सिबल की वो हम ले रहे हैं joules में, and the T temperature is taken in Kelvin. Okay, now this Q reversible means क्या? जब ये रिएक्शन को हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तब हमारी हीट कितनी रहेगी. ओके, जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, हमको ये रिवर्सिबल की वैल्यू चाहिए. तो अब इस ये Q मींस व्हाट? इट इज नथिंग बट द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, मींस ये दिस इज नथिंग बट Q is equals to delta H that we have seen. Okay, the change in the internal energy is nothing but the enthalpy when the process is taking place at constant pressure and temperature. So this system is also taking place at a constant temperature and pressure is also constant. Pressure का तो कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब वो constant है. तो अब ये जो डेल्टा H की वैल्यू 572 माइनस 572 kilojoules है, तो अगर Q रिवर्सिबल की बात करें तो ये क्या बन जाएगी? 5 प्लस बन जाएगी 572. ओके, किलो जूल्स है बट वी वांट द वैल्यू इन जूल्स, तो उसको हम लोग जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो ये अगर मैं करती हूँ, देन आई विल गेट द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग. यस, इफ आई सॉल्व दिस, then I'll get the value of entropy for the surrounding, and that comes out to be 1919 joules per Kelvin. ये वैल्यू इतनी आ जाती है. ओके, if we calculate it out, you get 1919 joules per Kelvin. Now we have got the value of this surrounding, and we already know the value of delta S for the system. So just find it out. So delta S total क्या बन जाएगा आपका? Sorry, this value is not in kilojoules, it is joule per Kelvin. Okay, ये भी joule per Kelvin है. Okay, because delta S is calculated in joules per Kelvin only. So ये value हम लोग को पता है. Now we know both the values, delta S for surrounding and delta S for system. So we can find out delta S total. Delta S total will be for the system, that is minus 327 joule per Kelvin plus 1919 joules per Kelvin. So if we find it out, since this is negative and this is positive, we are going to subtract it, and the higher number is positive, मतलब जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या रहेगा? Positive. तो डेल्टा S टोटल की वैल्यू क्या आ गई? Positive. And therefore means what? The delta S is positive means what? The entropy has increased. So whenever the total entropy increases, the system is spontaneous, and therefore this is a spontaneous process. तब ये क्या हो जाएगा? This is a spontaneous process. हो गया? समझ में आया? डेल्टा S की वैल्यू भले ही निगेटिव है, बट फिर भी ये प्रोसेस क्या है? This is a spontaneous process. Why? Because the total delta S total is positive. So
So according to the second law of thermodynamics, whenever the S total, the total entropy is greater than 0, then the process or the reaction is spontaneous, okay. जब भी इसकी वैल्यू आप लोगों को आ सकता है इन द न्यूमेरिकल्स, यू मे बी आस्क्ड टू कैलकुलेट आउट द डेल्टा एस वैल्यू, या आपको सराउंडिंग और सिस्टम की डेल्टा एस की वैल्यू दी जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट. मतलब दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द सराउंडिंग की वैल्यू, दे आर जस्ट गोइंग टू गिव यू डेल्टा एच. ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू दी रहेगी आपको एंड डेल्टा एस की वैल्यू दी रहेगी. अगर डेल्टा एस की वैल्यू जो दी है वो मतलब क्या है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, और एक डेल्टा एच की वैल्यू दी जाएगी जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है. ये रिवर्सिबल याद रखना है, यू हैव टू कन्वर्ट द साइन. डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो यू हैव टू टेक पॉजिटिव, एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन यू हैव टू टेक इट एज निगेटिव. ओके, तो ये जब आप लेंगे तो यू कैन फाइंड आउट सराउंडिंग डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग एंड जस्ट मेक द टोटल. इफ इट इज greater than 0 means if the value is positive, then the process is spontaneous, and if this value of delta S total is less than 0 means negative, then the process is non-spontaneous. तब ये क्या बन जाएगा, non-spontaneous. और अगर इसकी वैल्यू 0 है, डेल्टा S total की वैल्यू अगर आपकी 0 है, is equals to 0 means the process is in equilibrium, neither spontaneous nor non-spontaneous. वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया और इसीलिए देयर इज नो चेंज इन द रैंडमनेस, कोई डिसऑर्डरनेस में कोई चेंज नहीं, इनिशियल जैसा वैसा ही फाइनल है. क्यों? बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो दिस इज हाउ द एंट्रोपी इज रिलेटेड विद द स्पॉन्टेनिटी. ओके, बट ये तो ठीक है, हम लोगों ने टोटल कैलकुलेट कर दिया. बट जब हम थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने जितनी भी पढ़ाई की, वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द सिस्टम. हमने क्या किया था, सिर्फ सिस्टम पे ही ध्यान दिया, सिस्टम की ही स्टडी की, हमने आसपास का सराउंडिंग को स्टडी नहीं की. एवरी टाइम वी हैव लर्नड अबाउट द सिस्टम ओनली. तो अब इस चीज को एवरी टाइम सराउंडिंग से रिलेट करना एंड देन टू फाइंड आउट वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. एंड देयरफॉर द साइंटिस्ट गिब्स, okay, the scientist William Gibbs have derived a new relation, have given a new relation to find out the spontaneity or to relate spontaneity and enthalpy in a very simple way under the heading of Gibbs energy. Under the heading Gibbs energy means William Gibbs had given a relationship between the enthalpy and the spontaneity, and that is called as the Gibbs energy, that we will see now. Okay, this Gibbs energy is denoted by capital G, and the William Gibbs had given a relation that the Gibbs energy G is equals to H minus T delta S. Has given a relation as G is equals to H minus T delta S, where G is nothing but the Gibbs energy. It is nothing but Gibbs energy. H is your enthalpy. H is enthalpy. T is your temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. And delta S is the change in the entropy. And now in this case, since this enthalpy is a state function, we know that it is a state function. It depends only upon the initial and the final state and is independent of the path followed. Means H is a state function. Delta S means the change in the entropy. It is also a state function. Yes, because S is nothing but Q reversible upon T, and we know that Q reversible is nothing but H. So since this is state function, this is a constant, therefore already S entropy is also a state function. So the G, that is the Gibbs energy, is also a state function. All these are state function. Okay, now let us see how this Gibbs energy is related with the spontaneity. किस तरह से इसने विलियम गिब्स ने एंट्रोपी को रिलेट किया है, एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी के साथ किस तरह से रिलेट किया है,
Let us see that. Okay. So let us see Gibbs energy and spontaneity. How the Gibbs has related the entropy and the Gibbs energy with each other, and how he had related it with the spontaneity. Okay, let us see that. Now we know that the total entropy of the system is nothing but the entropy for the surrounding plus the entropy for the system. Okay, it is nothing but the entropy of the system plus surrounding. अब इस system को मैं बार बार system नहीं लिखूंगी because we have to concentrate over the system only. Okay, so let us write it as only delta S and plus delta S of surrounding. Okay, बार बार मैं उसको नहीं लूंगी क्योंकि मुझे तो ये दोनों terms को neglect करना है because Gibbs has given a new relation in order to consider only the entropy of the system, so that we can consider only the entropy of the system. हमको surrounding की कोई जरूरत ना पड़े, ऐसा ही Gibbs ने relation दिया. Okay. Now we know that according to the second law of thermodynamics, that for a spontaneous process this total delta S total is greater than 0. If this process is spontaneous, delta S total is 0 according to the second law of thermodynamics. Now if the system is going on and it has the change in enthalpy value as some negative value, ठीक है, मतलब कोई exothermic reaction है जिसमें delta H की value क्या है आपकी negative है. अब अगर डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है then डेल्टा H S फॉर सराउंडिंग, अगर हमें डेल्टा S फॉर सराउंडिंग निकालना है तो इट इज नथिंग बट Q रिवर्सिबल अपॉन T. यस, Q रिवर्सिबल मतलब यहाँ हमारा क्या है डेल्टा H अपॉन T. अब डेल्टा H यहाँ पर हमारा रिवर्स स्टेट में रहेगा. ओके, तो अब अगर डेल्टा H की वैल्यू सिस्टम जब कैरी आउट हो रहा है तो डेल्टा H अगर निगेटिव है मतलब हीट गिवन आउट हो रही है तो यहाँ हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे. मींस हमारा जो डेल्टा S फॉर सराउंडिंग है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ पॉजिटिव डेल्टा H अपॉन T. यस, इसी को अगर मैं आगे और सॉल्व करती हूँ, इफ I substitute this value, this is suppose my equation 1 and this is my equation 2. Now if I substitute this delta S surrounding in equation 1, then my equation 1 will become delta S total will be equal to delta S plus delta H upon T. Yes, it can be written like this, and therefore दिस डेल्टा एस हमको क्या है सिस्टम के डेल्टा एस को डिराइव करना है. ओके, जो सिस्टम का डेल्टा एस क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ टी को, क्या बन जाएगा टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ टोटल. यस, ऐसे लिख लूंगी मैं, और इसी को मैं यहाँ लेके चल जाऊंगी तो क्या बन जाएगा टी डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच. अब मुझे क्या किससे लेना देना है सिस्टम से, तो आई विल इक्वेट दिस इक्वेशन. तो मैं इक्वेशन को टी डेल्टा एस को यहीं रहने देती हूँ और ये जो बाकी के टर्म है इसको इधर लेके जाती हूँ. तो क्या बन जाएगा टी डेल्टा एस टोटल माइनस डेल्टा एच. यस, ऐसे बन जाएगा. सो ये मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी. According to the Gibbs energy, delta G is equals to delta H minus T delta S. Yes, just now we have said, we know that Gibbs energy is given as delta G is equal to delta H minus T delta S. So, T delta S की value क्या बन गई? This. So, we can write delta G is equals to, my equation will become, जिसमें डाल देते हैं हम लोग delta H minus T delta S की value क्या आ गई मेरी? T delta S of total minus delta H. ठीक है, तो अब ये जो डेल्टा H है, डेल्टा H क्या हो गया कैंसिल हो गया. मीन्स डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा S टोटल. यस, ये आ गया मेरा एक इक्वेशन. अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर मुझे ये इक्वेशन मिल जाता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा S, अकॉर्डिंग टू दिस अगर टोटल एंथैल्पी, ओके, टोटल एंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस रहेगी तो पॉजिटिव है. तो इफ द वैल्यू इज स्पॉन्टेनियस, इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी निगेटिव. सो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव. ओके, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव. जब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या बन गया निगेटिव, एंड एट दैट टाइम द प्रोसेस इज
spontaneous. At that time, process is spontaneous. Similarly, if the delta S value suppose negative, अगर एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव है, ओके, हमें चेंज इन एंट्रोपी पता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है. सो इफ द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज निगेटिव, तो ये निगेटिव 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 विल बिकम पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस प्रोसेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, देन एंड इफ द डेल्टा जी, डेल्टा एस की वैल्यू अगर जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीट डेल्टा जी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो इन दिस वे द गिब्स एनर्जी हैज गिवन अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम. यहां पर उसने क्या किया है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम को कंसिडर करके ही हैड डिराइव्ड a relationship between the entropy and the spontaneity. मतलब अब हमको ये एवरी टाइम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये टोटल एंट्रोपी जो है ये निकालने की जरूरत नहीं है. अगर गिब्स एनर्जी निगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस. इफ द गिब्स एनर्जी इज पॉजिटिव then it is non-spontaneous, and if it is equals to zero then it is in equilibrium. जनरली दीज में क्रिएट अ कंफ्यूजन, ओके, क्योंकि क्या होता है, हम लोग डेल्टा जी और डेल्टा एस, इस दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में. आप क्या करते हो, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, तो वही चीज आप गिब्स एनर्जी में भी ले लेते हो, ओके. बट रिमेंबर दैट द गिब्स एनर्जी इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एंट्रोपी, ओके. एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन गिब्स एनर्जी अगर निगेटिव है, then it is spontaneous. And the numericals may also be asked on this. They may give you the value of the total entropy and they may ask you find out Gibbs energy and state whether the reaction or whether the process is spontaneous or non-spontaneous. तब आप क्या करते हो, पॉजिटिव, टोटल एनर्जी जो है वो क्या आ गई, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस. ये आप लिख देते हो एंड दैट मेक्स योर न्यूमेरिकल रॉन्ग, ओके. सो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट इट आउट द गिब्स एनर्जी टेकिंग द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस दैट इज गिवन, एंड देन you will write down if the value of delta G is negative, then only the process is spontaneous. If the delta G value is positive, then it is non-spontaneous, and if it is equals to zero, then it is in equilibrium. Okay, have you got this? So here we have completed this chapter of chemical thermodynamics. All the topics I have covered. Some numericals on this topic are left that I will cover in the next video on which I am going to make separately on only the numericals. Okay, so after studying this complete chapter, you may see that video of numericals and practice the numericals. So there we will make a list of all the formulas that we have learned in this chapter, and simultaneously we will solve all the numericals on each and every topic. Okay, so hope you have understood today's video completely. If you have any query, you may ask me in my comment box, and we will meet in the next video with the video on the numericals. Okay, so till then, see you.